नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात कर रहे हैं, लचीलापन मतलब रिजिलियंस, और कैसे हम मुश्किलों से, चुनौतियों से पार पाते हैं। हमारे पास इसके लिए कई स्रोत हैं, कुछ निजी अनुभव हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक रिसर्च और हाँ, कुछ प्रैक्टिकल सलाह भी। खास तौर पर हम अमीर जोई की किताब है आई ट्राइड आई फेल्ड बट आई स्टेड स्ट्रांग, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये एक बहुत ही गहरी व्यक्तिगत कहानी है। हाँ बिल्कुल। और आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये लचीलापन, ये रेजिलियंस आखिर है क्या, कैसे पता चलता है और क्या इसे हम बढ़ा सकते हैं। जॉय की कहानी जो है वो इस बातचीत के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हाँ ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अमीर जोई की किताब, ये उनके 17 साल के होने की कहानी है। वो एक बॉक्सर थे और उन्हें एक कंपटीशन के लिए वजन कम करना था, और वो भी 10 दिन से कम में 11 किलो। 11 किलो, बाप रे। हाँ, सुनने में ही कितना ज्यादा लगता है। और किताब की जो खास बात है वो ये कि ये सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस वजन घटाने की पूरी प्रक्रिया, जो मुश्किलें आई, उस पूरी यात्रा पर फोकस करती है। किताब का नाम ही देखिए, कोशिश की, नाकाम रहे पर डटे रहे। इसी में लचीलापन झलकता है ना। बिल्कुल सही। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि जो स्रोत हमने देखे वो लचीलेपन को कुछ ऐसे ही समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। जब मुश्किल हालात आते हैं, कोई सदमा, कोई त्रासदी या बहुत तनाव, तो उन हालात में आप कैसे ढलते हैं, कैसे सामना करते हैं, वो प्रक्रिया ही लचीलापन है। ये सिर्फ कोई एक गुण नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और आजकल पॉजिटिव साइकोलॉजी में ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो मतलब जॉय ने जो किया, जिस तरह वो उस मुश्किल से गुजरे, वो अपने आप में लचीलेपन का एक उदाहरण है, भले ही नतीजा वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। हाँ, काफी हद तक उनका अनुभव हमें उन तरीकों से जोड़ता है जो स्रोत बताते हैं असफलता से उभरने के तरीके। जैसे पहली बात, अपनी भावनाओं को महसूस करना, उन्हें दबाना नहीं। जॉय ने जरूर गुस्सा, निराशा, शायद डर भी महसूस किया होगा। फिर जो हुआ उसे स्वीकार करना, मानना कि हाँ ये हुआ। इसके बाद एक चीज आती है पॉजिटिव रीफ्रेमिंग। पॉजिटिव रीफ्रेमिंग ये क्या है? मतलब हर बुरी चीज में कुछ अच्छा देखना? हाँ, लेकिन जबरदस्ती नहीं। मतलब नजरिए को बदलना, ये देखना कि इस अनुभव से क्या सीखा जा सकता है या ये आपको आगे के लिए कैसे तैयार कर रहा है। शायद जॉय ने सोचा हो, ठीक है मैं वजन कम नहीं कर पाया, पर मैंने अपनी सीमाएं जानी, या इस अनुभव ने मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, और इसके साथ ही खुद के बारे में जो नेगेटिव बातें मन में आती हैं, मैं बेकार हूँ, मुझसे नहीं होगा, उनको चुनौती देना, और आखिर में फिर से कोशिश करने का जज्बा, शायद किसी और तरीके से, ये सब मिलकर लचीलापन बनाते हैं। बिल्कुल। और जैसा कि हमारे स्रोत भी कह रहे हैं, ये लचीलापन सिर्फ एथलीटों के लिए या बड़े हादसों के लिए नहीं है। हमने बिग फीलिंग्स या MVP जैसी किताबों की बात देखी, जो बताती हैं कि दफ्तर का रोज का तनाव, हाँ, या निजी जिंदगी के उतार चढ़ाव, इनसे निपटना भी तो इसी लचीलेपन का हिस्सा है। सही कहा, बिल्कुल। एक मनोवैज्ञानिक स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि लचीलेपन का सीधा संबंध अच्छी शारीरिक और भावनात्मक सेहत से है। शायद इसलिए कि जो लोग मुश्किलों से बेहतर निपटते हैं, वो तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देते। तो शरीर और मन दोनों पर बोझ कम पड़ता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चलती है। कुछ स्रोत लचीलेपन के 3 मुख्य सिद्धांत बताते हैं। 3 सिद्धांत? अच्छा। हाँ, पहला है प्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की क्षमता है कि वो नई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल सके। जैसे गीली मिट्टी को आकार देते हैं, वैसे ही दिमाग नए रास्ते बना सकता है, सीख सकता है, ढल सकता है। वाह, दिमाग का लचीला होना ये तो कमाल की बात है ना। दूसरा सिद्धांत है सामाजिकता। मतलब हम इंसानों की ये प्रवृत्ति कि हम मुश्किल में अकेले नहीं रहते, हम दूसरों का साथ ढूंढते हैं, ग्रुप में रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जॉय के केस में भी शायद उनके कोच, दोस्त, परिवार, हाँ, उनका सपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल। और तीसरा सिद्धांत है अर्थ, यानी मीनिंग। मतलब अपने मुश्किल अनुभवों में भी कोई मतलब ढूंढ लेना, कोई सबक निकालना, उसे सिर्फ एक बुरी घटना न मानकर अपनी जिंदगी की कहानी का एक हिस्सा समझना, जिसने आपको कुछ सिखाया या बदला। शायद जॉय ने उस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ वजन घटाने की नाकाम कोशिश नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा के तौर पर देखा हो सकता है। ये तीनों चीजें, प्लास्टिसिटी, सामाजिकता और अर्थ ढूंढना,
ये हमें मुश्किल वक्त में टिके रहने में मदद करती हैं। ये तीनों सिद्धांत, दिमाग का बदलना, दूसरों का साथ और मतलब ढूंढना, ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सिर्फ बड़ी मुश्किलों पर ही नहीं, शायद रोज की छोटी छोटी निराशाओं में भी काम आ सकते हैं। बाकी स्रोत ये सब क्या बताते हैं? यही कि लचीलापन वो असफलता से डरकर भागना नहीं है, बल्कि मुश्किलों के बीच रास्ता बनाना है, उनसे सीखना है, खुद को ढालना है और किसी ना किसी तरह आगे बढ़ते रहना है। हाँ, और यहीं पर एक गहरा सवाल भी उठता है कि क्या लचीलापन सच में सिर्फ बाउंस बैक करना है, मतलब वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाना जैसा हम अक्सर सुनते हैं, या फिर ये उस मुश्किल अनुभव की वजह से कुछ सीख कर, बदल कर एक नए, शायद ज्यादा मजबूत तरीके से आगे बढ़ने के बारे में ज्यादा है? ये सोचने वाली बात है। आज हम आमिर जवी, जो मुसन्निफ, बॉक्सर और कारोबारी शख्सियत हैं, उनकी जिंदगी और खास तौर पर उनकी किताब आई ट्राइड आई फेल्ड बट आई स्टेड स्ट्रॉन्ग पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। जी, हमारे पास उनकी सवानह उम्री है, उनकी किताबों से कुछ इक्तबासात हैं और रेजिलियंस यानी लचक के नफ्सियाती तसव्वुर पर भी मवाद है। तो मकसद ये समझना है कि आमिर जवी का ये ज़ाती तजुर्बा हमें क्या सिखाता है, खास तौर पर मुश्किलात का सामना करने और हिम्मत ना हारने के हवाले से। बिल्कुल, और यही बात दिलचस्प हो जाती है कि कैसे एक शख्स की, आप कह लें, ज़ाती कहानी, जिसे आमिर जवी ने अपनी किताब में बड़ी तफसील से बताया है, वो लचक के एक बड़े नफ्सियाती तसव्वुर को जाहिर करती है। सही। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रहती, बल्कि इंसानी हिम्मत की एक मिसाल बन जाती है। तो आइए जरा किताब के अंदर झांकते हैं। आई ट्राइड आई फेल्ड बट आई स्टेड स्ट्रॉन्ग। ये आमिर जवी के उस वक्त का जिक्र है जब वो 17 साल के थे और एक बॉक्सिंग मुकाबले के लिए वजन कम कर रहे थे। जी, और वो भी सिर्फ 10 दिन से कम वक्त में। 25 पाउंड यानी तकरीबन 11 किलोग्राम। हाँ, ये तो काफी शदीद कोशिश है। बहुत ज्यादा। किताब में इसी कोशिश के तरीके, अमल, जो मुश्किलें आईं और पूरा सफर बयान किया गया है। दरअसल उन्वान ही काफी कुछ बता देता है ना। मैंने कोशिश की, मैं नाकाम हुआ, लेकिन मैं मजबूत रहा। बिल्कुल। देखें, लचक की तारीफ भी यही है कि आप मुश्किलात, सदमे या शदीद तनाव के बावजूद कैसे संभलते हैं, कैसे अडेप्ट करते हैं। जोवी की कहानी में यह बात नुमाया है कि वो नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं। मैं नाकाम हुआ, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हार रहे, मजबूत रहा। तो ये सिर्फ जीतने की बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस अमल की बात है, उस बर्दाश्त की। ज़राए भी यही कहते हैं कि अमल पर मबनी लचक, यानी नतीजे से कता नजर कोशिश करना और मजबूत रहना, ये अक्सर बहुत अहम होता है। और ये जो लचक है, ये सिर्फ बॉक्सिंग रिंग तक ही तो महदूद नहीं लगती इनकी जिंदगी में। जी नहीं। वो रोमानिया में पैदा हुए, फिर मिस्र के कौमी बॉक्सिंग चैंपियन बने। चोटों की वजह से 2018 में शौकिया बॉक्सिंग छोड़ दी और अब प्रोफेशनल बॉक्सर भी हैं, लिखते भी हैं और कारोबार भी चला रहे हैं। हाँ, shipmanager.ai, Zenzon MMA जिम, जॉय मैरिटाइम, काफी कुछ है। तो क्या ये जो मुख्तलिफ मैदानों में काम करना है, ये जाहिर करता है कि चैलेंजेस से निमटने का ये अंदाज उनकी शख्सियत का हिस्सा है? ये बहुत अहम नुक्ता है। असल में ज़राए भी यही बताते हैं कि लचक कोई ऐसी चीज नहीं जो बस पैदाइशी तौर पर मिल जाती है। अच्छा। जी, बल्कि ये एक अमल है जिससे आप सीख सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। कैसे? मतलब क्या तरीके हैं इसके? कई हिकमत अमली हैं, जैसे जो हुआ उसे कबूल करना, पॉजिटिव सोचना, मतलब नाकामी को सीखने का एक मौका समझना, अपनी मनफी सोच को चैलेंज करना और हकीकत पसंदाना अहदाफ बनाना। और जॉवी की किताब का एक मकसद भी तो यही है कि दूसरों को अपने मकासद के लिए काम करने की तरगीब मिले। बिल्कुल। ये ख्याल कि आपके तजुर्बात, खास तौर पर मुश्किल तजुर्बात, दूसरों के लिए सबक बन सकते हैं। जैसे नाकामी को अपनी पहचान न बनने देना, बल्कि उसे एक वाकया समझना, ये लचक पैदा करने में मदद देता है। ये भी दिलचस्प है कि वो सिर्फ जाती तजुर्बात पर नहीं लिखते, उनकी दूसरी किताबें फलसफा पर है। जी, ट्रीटिस ऑफ मोरालिटी। हाँ, और कंट्रोवर्शियल वेरासिटीज, जो शायद गलत फहमियों को दूर करती है, और जासूसी फिक्शन भी, द विलियम्स जॉय क्रॉनिकल्स। जी, तो उनकी दिलचस्पियां काफी वसी हैं। क्या ये मुमकिन है कि ये जो लचक वाला मरकजी ख्याल है, ये उनके दूसरे कामों में भी किसी न किसी तरह नजर आता हो? यकीनन ये मुमकिन है। देखें,
जब आप मुख्तलिफ शोबों में चैलेंजेस का सामना करते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, जहनी हो या कारोबारी, तो आपकी लचक की सलाहियत और मजबूत होती है। सही। हर मैदान की अपनी मुश्किलात होती हैं और उनसे निमटने के लिए आपको मुख्तलिफ तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो शायद उनकी तहरीरों का ये तनो भी इसी हमाजात लचक को जाहिर करता हो। यानी मसाइल को मुख्तलिफ जावियों से देखना और हल करना। बिल्कुल। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटें, आमिर जवी की कहानी, खास तौर पर इस किताब आई ट्राइड, आई फेल्ड बट आई स्टेड स्ट्रॉन्ग के जरिए हमें लचक की एक बहुत अमली और ताकतवर मिसाल देती है। जी हाँ। ये सिर्फ चैलेंज का सामना करना नहीं है, बल्कि नाकामी को मानने के बाद भी हिम्मत को बरकरार रखना और आगे बढ़ने की ताकत तलाश करना है। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और आखिर में एक सोचने की बात जो हमारे जराए से निकलती है जी, वो ये है कि अगर हम लचक को सिर्फ एक मुकर्ररा खूबी ना समझें, बल्कि एक मुतहर्रिक अमल माने, एक ऐसी सलाहियत जिससे सीखा जा सकता है, जिसे बेहतर बनाया जा सकता है, तो इससे मुस्तकबिल की मुश्किलात से निमटने का हमारा अपना तरीका कैसे बदल सकता है। ये वाकई एक अहम सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। जी, ये सवाल हमें अपनी जिंदगी के चैलेंजेस को देखने का एक नया जाविया फराहम करता है। सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਝ ਲੇਖ ਤੇ ਨੋਟਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਦਿਲਚਸਪ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ, ਅਮੀਰ ਜੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਜੋਏ ਮਤਲਬ ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਦਮੀ ਵੀ। ਉਹ ਮੂਲ ਰੋਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਿਸਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਦੇ ਸੀ। ਓ। ਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਜਰਬੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਝਲਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ 56 ਕਿਲੋ ਵਰਗ 'ਚ। ਵਾਹ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਘਰਸ਼, ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਆਈ ਟਰਾਈਡ, ਆਈ ਫੇਲਡ ਬਟ ਆਈ ਸਟੇਡ ਸਟਰੋਂਗ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੇ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 11 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ। ਓਹੋ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਗਾ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ, ਸਦਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਖਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਨੋਟਸ 'ਚ, ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਵੈਰਾਸਿਟੀਜ਼। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਖੱਬਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 10% ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਸਗੋਂ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਐਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋਏ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੂੰਗੀ ਪੜਚੋਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਮੋਰੈਲਿਟੀ। ਅੱਛਾ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਗੀ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ। ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਵੇਦਾਂ, ਯੂਨਾਨੀਆਂ, ਮਿਸਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਨੈਤਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਸ ਸਾਡਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀਆਂ। ਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਸੋਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਸ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਲੌਕ ਹੋਮਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਸਰੋਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮਜ਼ੀਅਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੋਮਜ਼ੀਅਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਸ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਤਰਕ, ਨਿਰੀਖਣ, ਉਹ ਸਭ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੱਥਾਂ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸੇ ਹੋਮਜ਼ੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰੋਤ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਸੂਸੀ ਲੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਦਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਜॉय ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਸਰ ਦਿਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਵਿਲੀਅਮਸ ਜॉय ਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਜॉय ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਜਰਬੇ, ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸੱਚਾਈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਕੜਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮਨ 'ਚ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਮ ਚਲਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਥਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜॉय ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਈ ਟਰਾਈਡ ਆਈ ਫੇਲਡ। ਹਾਂ, ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। Ever feel like life just keeps throwing things at you? You know? Oh, definitely. Whether it's work deadlines piling up or maybe a personal setback that feels like a real gut punch. Or just that constant pressure, Aye. right? Keeping up, it can get pretty overwhelming. You really can. Okay, so let's unpack that feeling. Being overwhelmed. Because today we're diving deep into something absolutely vital. Resilience. Yes. That core ability, you know, not just to weather the storms, but to actually bounce back, maybe even come out a little stronger. That's it. Exactly. And for this exploration, well, we've pulled together a pretty fascinating mix of material. Okay. We're looking at some powerful books, you know, ones that offer strategies for navigating the tough times. Right. We've got insights on resilience from positive psychology, some really compelling real-life examples shared by people on Reddit. Oh, interesting. Yeah, and even some thought-provoking titles from an author named Amir Joy, plus a bit of historical perspective from this work, a treatise of morality. Oh, quite a range. It is. So our goal really is to dig into all of this, extract that practical wisdom, find different ways of thinking about how, you know, we can all build more of that crucial resilience in our own lives. Okay. So with something as complex, as multifaceted as resilience, where do we even begin? Good question. Well, a theme that really resonated across several of our sources is just the fundamental importance of recognizing and, well, dealing with our emotions. The feelings, yeah. Yeah, Big Feelings by Liz Fosslien and Molly West Duffy, they really dive into this, especially in the professional world. Right, the workplace context. Exactly. They explore how common workplace anxieties, uncertainty, feeling like you're constantly being compared, just plain burnout. Which is everywhere. Totally. They argue these aren't signs of weakness, right? They're natural responses that, if you don't address them, can really impact your resilience. Yeah, a key takeaway from Big Feelings seems to be that emotional resilience isn't about, like, pretending you're fine. It's not suppression. It's more about developing the awareness and the skills to process those feelings constructively, to prevent burnout, find healthier ways to respond to stress. And that connects, doesn't it, to something we saw on Reddit. Someone there was looking for books that showed pain, suffering, adversity, but also growth, resilience, learning. Exactly. You can't really get to that growth part, that learning, without first acknowledging and, you know, working through the difficult stuff. Yeah. The pain, the adversity. That's so true. And it's not just acknowledging them. It's like
actually taking the time to figure out what you're feeling. Pinpointing it. Yeah, the Overcoming Failure article we looked at specifically says feel your emotions and take time to name the emotion. And this is where it gets really interesting because they point out that trying to just bottle up those painful feelings isn't like a sign of strength. No, quite the opposite sometimes. Yeah, it can actually have negative consequences for our health down the line. That's such a critical insight because when we suppress emotions, it takes a real toll, a significant toll on our overall well-being. Right. But by naming an emotion, saying, okay, this is anger or this is sadness or frustration, you kind of create a bit of distance. A bit of space. Exactly. And you gain a sense of control, maybe, instead of just feeling completely swamped by it. And that lets you process it more constructively. Okay, so building on that, understanding our emotional landscape. Another key theme that seemed to emerge was the vital role of finding purpose, motivation. The why. Yeah, exactly. Yeah. John R. Miles is Passion Struck. It talks about how we can unlock our potential by really connecting with what drives us. He offers like actionable strategies for finding that core purpose, navigating those inevitable setbacks, and making sure our lives align with our, fundamental values. And this lines up really strongly with the meaning and resilience in trauma recovery section of that Positive Psychology and Resilience paper we looked at. How so? Well, they discuss how the ability to create meaning in your life is a powerful predictor of sustained resilience, especially after tough events. Right. Makes sense. And they define significance, or meaning, as having a clear path, feeling connected to something bigger than yourself, and crucially, feeling useful, having a sense of contribution. So it's not just about blindly pushing through then, it's having that underlying why that acts as your compass when things get tough. Yes. It provides a real anchor, doesn't it? Yeah. Exactly. That sense of purpose fuels, intrinsic motivation. If we go back to that definition, taking a path, linking to something bigger, feeling useful, these things become internal resources. They bolster our resilience. Okay. When we feel our lives have meaning, we're just inherently more driven to overcome the obstacles. Okay, now for those of us looking to really strengthen our inner fortitude, Tony O'Gregan's MVP gets into the principles of high performance habits. The practical stuff. Yeah, drawing insights from sports psychology, leadership. He emphasizes mental toughness, setting clear, meaningful goals, and cultivating that self-discipline you need to achieve them. And these aren't just for, elite athletes or CEOs. No, definitely not. They're fundamental principles you can apply to professional growth, personal growth, pretty much anything. What's fascinating here is the idea, which was highlighted in that Positive Psychology paper too, that resilience isn't just some innate trait you either have or don't. It's a skill, something you can develop, much like managing stress. Right, you can work on it. Yeah. And the paper also points out that optimism, that tendency to look on the bright side, is a personality characteristic strongly associated with resilience. Okay. And interestingly, it's linked to the brain's reward system. So consciously training ourselves to focus on the positive can actually activate pleasure pathways in our brain, which reinforces that positive outlook. Huh. It's almost like training a mental muscle, isn't it? You have to actively work it. Exactly. Engage in the process. Speaking of shifting perspective, When the Clouds Come by Drew Povey with Sam Draper offers a really insightful viewpoint on that. They suggest that challenges, the things we encounter, they aren't just obstacles to get around. They can actually be opportunities for real growth, significant growth, if we approach them with the right mindset. That resonates really nicely with the Overcoming Failure article's concept of positive reframing. Ah, right, reframing. Yeah. Instead of automatically labeling something a failure, they suggest we actively look for the potential positives within that situation. Find the silver lining, kind of. Sort of, yeah. But more actively. Rephrasing those negative internal narratives can be incredibly empowering. Instead of thinking, I'm a failure because I didn't get that promotion, you could reframe it as, okay, I haven't achieved that specific goal yet, emphasis on the yet, and this experience has given me valuable insights for next time. Right. That subtle shift in language, it can have a huge impact, can it, on your outlook, your willingness to try again? Absolutely. It's about actively seeking the lesson, even when the experience itself is painful. Okay. Now, looking at the other side of that coin, pushing ourselves, it's also crucial to cultivate realistic expectations and practice self-compassion. Oh, hugely important. Stassi Schroeder's You Can't Have It All, it offers a refreshingly unfiltered look at the immense pressures we put on ourselves.
Modern life, right. Totally. She shares her own setbacks and really encourages us to step back and redefine what success actually means to us, not chasing some unattainable societal ideal. That is such an important point. And connected back to that Overcoming Failure article again, they also advise identifying those unhelpful negative thought patterns, like all or nothing thinking. Where it's either perfect or a total disaster. Exactly, that kind of thinking. The key is to actively challenge those rigid thoughts. Use more balanced, positive affirmations. It's really about extending that same kindness and understanding to ourselves that we'd offer a friend who's struggling. Yeah. Recognizing that setbacks are just a universal human thing. It's like giving ourselves permission to be imperfect, to be human with all the flaws and vulnerabilities. Yeah. Precisely. Okay, now shifting focus slightly. Some of our sources got into resilience, specifically within the workplace. Right, the daily grind. Yeah. Adele Waldman's novel, Help Wanted, it provides a really insightful and often quite funny look at office dynamics, politics, how our self-worth gets tangled up with our careers. Fiction, but relatable. Totally. Even though it's fiction, it offers this surprising sense of comfort, like showing that career struggles are really common. And there are valuable lessons in there about advocating for yourself, building resilience in that professional space. And then Claire Bagland's On the Clock offers a more direct examination of labor, job security, that ongoing search for fulfillment in today's work landscape. Right. Which is particularly relevant if you're someone, reevaluating your career path, trying to find more meaning in your work. These narratives kind of underscore that resilience at work often involves skillfully navigating those complex relationships and bouncing back from professional disappointments. Absolutely. And sometimes just knowing you're not alone in facing those challenges, that can be a huge boost to your resilience right there. So true. Then we have Zoe Foster Blake's Things Will Calm Down Soon, which takes a slightly different tack, often very funny. Bit lighter. Yeah, dealing with stress, the inevitable emotional ups and downs. It's kind of a reassuring reminder that challenging periods are usually temporary. Which is good to remember. Right. And she offers some really practical, often humorously relatable strategies for navigating them with a bit more grace and a sense of perspective. Humor, even. That element of humor. Yeah. It can be a remarkably effective tool for resilience, can it? Yeah, how so? Well, it allows us to create a bit of emotional distance from whatever is stressing us out. See it from a slightly different angle, maybe less threatening. And it can make an overwhelming situation feel just a little more manageable. And as the book suggests, navigating with grace is also about, maintaining your composure, your self-respect, even when things are tough. Right. And speaking of navigating tricky situations, Melody Wilding's Managing Up, that focuses specifically on those often challenging workplace relationships. Difficult bosses, colleagues. Exactly. It provides practical strategies for building confidence, advocating for your needs effectively, strengthening your leadership skills, all crucial aspects of being resilient in your career. What's important to recognize there, I think, is that resilience isn't solely about individual inner strength. It's also about our ability to navigate our external environment, the relationships within it. That makes sense. Being able to manage those complex workplace dynamics with confidence, with self-assurance, that really contributes significantly to our overall professional resilience. Okay, now bringing it back to the more research-y side, that Positive Psychology and Resilience paper made a really insightful point. It states that resilience is a procedure, not just a fixed trait. That's a really key takeaway, I think. Yeah? A procedure. Yeah. What does that mean exactly? It emphasizes that resilience is an active, ongoing process, something we consciously develop, refine throughout our lives. It's not static. Okay. And the paper also highlights that our early life experiences play a significant role in laying the initial groundwork for resilient behaviors. Because the brain is just so adaptable during those formative years. So it's about those early foundations, yeah, but also knowing that we can keep building, keep strengthening our resilience no matter where we are in life. Exactly. It's never too late to work on it. Now, to really illustrate this idea, resilience in action, that Reddit thread we looked at offered some truly compelling real-world examples. Yeah, those are powerful. There was one user who mentioned Cattle Trails to Trenches by Howard Green Smith. This incredible individual who, despite losing an arm, Unbelievable. continued his incredibly physically demanding work. Cowboy, farrier, that's just amazing adaptation. Perseverance. Absolutely incredible. And another user highlighted Rainer Wind's The Salt Path. Oh yeah, I know that one. Such a powerful story.
A couple facing eviction, a serious health diagnosis, and they choose to embark on this incredibly long, physically grueling coastal walk. Wow. These are just such potent illustrations of how people can find profound strength, real resilience, when faced with truly significant adversity. And someone mentioned mountaineering books too, right? Yeah, which fits perfectly. Yeah. Showcasing that human capacity to endure, to overcome in really extreme, demanding circumstances. It really does put our own, day-to-day challenges into a broader perspective, doesn't it? It certainly can. And it underscores that point from the positive psychology paper about how the field focuses on studying, promoting the best aspects of humanity. And resilience is such a prime example of that positive adaptation. Exactly. Positive psychology isn't about ignoring the negative. It's about understanding and actively cultivating those inherent strengths, those capacities that let us navigate and ultimately overcome the tough stuff. Resilience is absolutely a cornerstone of that field. Right. Okay, finally, we also had several mentions of books by an author named Amir Joy. Ah, yes, Amir Joy. Titles like A Treatise of Morality and I Tried, I Failed, but I Stayed Strong, which apparently documents a personal journey, a significant weight loss for a boxing competition. Right, that's what it seemed like. We also saw mentions of other titles like Ideologies Within the Bounds of Reason. So while we don't have, deep dives into the content of all of those, Right. the sheer diversity of topics suggests an author who's clearly engaged with exploring different facets of personal challenges, growth, even broader philosophical ideas. It's certainly interesting to see that range, that intellectual curiosity. I tried, I failed, but I stayed strong. The title alone speaks directly to that central theme, right? Perseverance through a demanding physical challenge, which undoubtedly requires huge resilience. For sure. And the other titles hint at maybe a deeper engagement with the complexities of navigating life's challenges generally, which is, at its core, what resilience is all about. So as we kind of bring this deep dive to a close, it's really clear, isn't it? Resilience isn't some fixed quality you either have or you don't. Not at all. It's dynamic, an evolving process. It's a collection of learnable skills, adaptable perspectives, things we can all cultivate. It involves understanding and processing our emotions healthily, connecting with that inner purpose to fuel us, building mental toughness through conscious effort. Right, choosing to reframe challenges. Yeah, practicing kindness and compassion towards ourselves. Crucial. And learning valuable lessons from every experience, the successes and the setbacks. And ultimately, like you said earlier, it's not about trying to avoid the storms of life. That's impossible. Right. It's about developing that inner capacity to navigate them effectively, to bend without breaking, and to emerge on the other side, maybe a little changed, sure, but certainly wiser, with a deeper understanding of our own strength. Well said. So here's maybe a final thought for you, the listener, to consider. Looking back at our discussion today, which of these different facets of resilience resonates most with the challenges you might be facing right now? Good question. What small, concrete step could you take, maybe even today, to cultivate just a little more of that vital inner strength? Perhaps it's, picking up one of the books we mentioned. Or maybe it's simpler, just taking a few moments to reflect on a recent difficulty with a more open, maybe more compassionate, and definitely growth-oriented mindset.